Good evening, children. So in the previous class, I have started the topic climate. So in summarized manner, I am just telling you that what we have studied in the previous class. So we have studied, firstly see the outline of the chapter. We have to study about the climate of India, annual cycle of seasons and distribution of and precipitation. See, we have talked about the climate of India. As you all know, climate is the long-term effect of the sun's radiation, the rotating Earth's surface and atmosphere. The climate of India is described. Remember that the climate of India is described as the monsoon type. And children, monsoon is derived from the Arabic word mausim, which literally means season. See, this is the vegetation, this images of vegetation, which can tell us a lot about climate on a barren polar ice cap. Temperatures are below freezing point the year round. And children, in the tropical rainforests are found in areas of high temperatures and heavy rainfall. See, two of the important elements that affect the climate of India are temperature and precipitation. And children, during summers in India, the temperature may rise to reach 50 degrees Celsius or more in some parts of Rajasthan. And if I talk about the cool desert, then example can be taken as much of Utah has a cool desert climate because mountains block rainfall. The mountains in the background remains snow-capped because of the effects of the areas. Then the other topic is climatic control. The word offshore winds means that winds which blow on the corners. As the waves moves, जो वहाँ से हवा आती है उस तरफ से, that is known as. Now, if I talk about climatic control, factors affecting climate of a place: altitude, latitude, relief, ocean currents, distance from the sea, pressure and wind system. So these are the comments. Now, my next point is, see children, these are the factors. Now let's talk about what are the factors which affect the climate. Factors affecting the climate of a place. So in this, so many things come. They are latitude, then comes your altitude, pressure and wind system, distance from the sea, ocean currents and relief. These are the factors which affect the climate. Now let's talk about the other term. The other term is factors affecting the climate of India. See children, there are several factors which affect the climate of India. They are latitude, altitude and relief, winds pressure, the atmospheric condition that influence Indian weather and climate are distribution of atmospheric pressure and surface winds, upper air circulates, western disturbances during winter and tropical cyclones during the southwest monsoon. Now,
and these are the several major pressure belts are there. You would be knowing about the several pressure belts. In the image you can see a picture would be shown. See, there are the conditions of prevailing western, easterlies, southeast trade winds, northeast trade winds, prevailing westerlies and polar easterlies. Now, if I talk about the Indian monsoon, Indian monsoon is a term used for the various aspects of a distinct climatic regime that is found in India. Several facts will clear about mechanism of monsoons. And the several facts are: first, intertropical convergence zone. Today we have to start from intertropical convergence zone, that is ITCZ. Okay, if I talk about intertropical convergence zone, let's talk about in the equatorial latitudes, the intertropical convergence zone, that is in short we call it as ITCZ, is a broad trough of low pressure. Here the northeast and the southeast trade winds converge. This convergence zone lies more or less parallel to the equator but moves north or south with the apparent movement of the sun. Now, one name you would have heard, that is El Nino. The name is ELNINO. The name is El Nino. Now what is this El Nino? This is a name. El Nino is a name given to the periodic development. It is a name given to the periodic development of a warm ocean current along the coast of Peru as a temporary replacement of the cold Peruvian current. El Nino is a Spanish word meaning the child. See, जो El Nino होता है, El Nino is connected with the southern oscillation and leads to an increase in sea surface temperature and weakening of the trade winds in the region. Hence, the phenomenon is referred to as ENSO, El Nino Southern Oscillation. So now children, I am going to start with the topic of the onset of the monsoon. The onset of the monsoon and the withdrawal. So let's talk about this topic. See, the monsoon winds, जो monsoon winds होती हैं, the monsoon winds which flow in a particular direction at a particular time of the year. These winds are pulsating. ये जो winds होती हैं, these are pulsating in nature and are affected. और इस पे जो इफेक्ट पड़ता है बहुत सारी चीज़ों का,
by different atmospheric pressure, by different atmospheric conditions. Generally, the duration of monsoon is between 100, जो duration होता है monsoon का, that is between 100 to 120. That is from 100 to 120 days. That is from early June. ये शुरुआत की जून से स्टार्ट होता है और सितंबर के एंड तक, and it prevails till the mid of September. The burst of monsoon occur at the time of its arrival. जब इसकी शुरुआत होती है, मानसून की जो शुरुआत होती है इंडिया में, at this time the normal rainfall increases suddenly. जो हम लोग की जो नॉर्मल रेनफॉल होती है उसमें तेजी से इंक्रीज होता है. It increases at rapid speed suddenly, and this is continuous constantly. और ये constant रहता है काफी समय तक. For a long duration of time, it is constant. Now, the next point, the monsoon phenomena. जो monsoon का phenomena होता है, that starts from the coast of Kerala. ये जो पूरा हमारा monsoon इंडिया में चलता है, केरला से स्टार्ट होता है, केरला के कोस्ट से, and extend northwards, and it extends northward. Here it splits into two. Here it splits into two. That is the Arabian Sea branch and the Bay of Bengal branch. दो parts में होता है. That is, one is the Arabian Sea branch and the other is the Bay of Bengal branch. See, ये जो दोनों branches होती हैं, these branches advance rapidly towards northern India and reach Mumbai and Assam respectively within 10 to 12 days. By mid-July, और जो जुलाई का महीना 15-17 तारीख के आसपास, by mid-July they reach the hills of Himachal Pradesh and Uttarakhand, and the entire country is under a heavy spell of monsoon rains. यहाँ पे अच्छी खासी बारिश स्टार्ट हो जाती है. Withdrawal or retreat of the monsoon begins in northwestern states of India by early September. और जो मिड अक्टूबर होता है, मिड अक्टूबर में, by the mid October it withdraws completely from the northern half of the peninsula. By early December the monsoon has withdrawn from rest of India. और जो हम लोग का दिसंबर का महीना आता है लगभग, तब तक हमारे यहाँ से मानसून पूरा निकल चुका होता है. The entire monsoon has crossed. Now Kritika, you have asked me one question, offshore winds. Now I should tell you, जो हम लोग के जो offshore winds होते हैं, see, जो the winds blowing from the coast out to sea are the gold standard for most surfers most of the time. जो winds का जो main function होता है, the main function of these winds is to delay breaking. That is the meaning. Now, I'll be starting with a new topic. My new topic is annual cycle of seasons. In your books you would have studied about the annual cycle of seasons. और अगर मैं easy शब्द में कहूँ, if I say in easy words, the term offshore
The term offshore wind may refer to any wind over open water. Okay, so now let's talk about the annual cycle of seasons. See, if I talk about seasons, there are total four. Total 4 seasons are there. And we can see the names. India experiences 4 main seasons. The first one is hot weather seasons, cold weather season, advancing monsoon season and retreating monsoon season. तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं hot weather season की. That is in summers. See, the sun's northward movement, जो सन का northward movement होता है, the sun's northward movement causes the global heat belt. It causes the global heat belt to shift northwards. This causes the hot weather season. अब इससे क्या होता है? हॉट वेदर सीजन होता है इंडिया. पूरे भारत में गर्म मौसम स्टार्ट हो जाता है मार्च से लेके मई तक. The effect of the shifting of heat, the effect of the shifting of heat belt can be seen clearly from the temperature recordings during March, May at different stations. अलग अलग जगहों पे अगर हम लोग तापमान देखेंगे, टेम्परेचर देखेंगे तो वो चेंज होता रहता है. और ये सब क्यों चेंजेस होते हैं? बिकॉज ऑल ऑफ देम आर लोकेटेड एट वेरियस लैटिट्यूड्स. The temperature is around 42 degrees Celsius in April in Gujarat and Madhya Pradesh. The temperature of 48 degrees Celsius is common around May in northwestern regions of India. The moderating effect of the ocean is very obvious. बहुत obvious होता है when we observe the temperature. अगर हम लोग पेनिनसुलर इंडिया का टेम्परेचर देखें तो ये कॉमन होता है. द डेक्कन प्लेट्यू, अगर हम लोग डेक्कन प्लेट्यू की बात करें, द डेक्कन प्लेट्यू एक्सपीरियंसेस अ टेम्परेचर अप टू 38 डिग्री सेल्सियस इन अराउंड मार्च. जो डेक्कन वाली हमारी बेल्ट होती है उसमें मार्च में भी जो टेम्परेचर होता है दैट इज 38 डिग्री सेल्सियस. इफ आई टॉक अबाउट नॉर्थ, इन नॉर्दर्न इंडिया, जो नॉर्दर्न इंडिया होता है, राइजिंग टेम्परेचर एंड फॉलिंग एयर प्रेशर. समझना, टेम्परेचर बढ़ता है और एयर प्रेशर भी उसके साथ बढ़ता है. राइजिंग टेम्परेचर, देखो इन नॉर्थ इंडिया की अगर मैं बात करूं तो जब टेम्परेचर राइज करता है, टेम्परेचर में जब बढ़ोतरी होती है, राइजिंग टेम्परेचर, और क्या चीज़ घटती है? दैट इज फॉलिंग एयर प्रेशर. टेम्परेचर बढ़ेगा, एयर प्रेशर घटेगा. अकर इन द समर मंथ्स, और ये पूरे समर के महीने में ये कंसेप्ट रहता है. एज एक्सटेंडेड लो प्रेशर एरिया डेवलप्स इन नॉर्थ इंडिया by the end of May, this low pressure area extends from the Thar desert in the northwest to Patna and Chota Nagpur plateau in the east to southwest. Around this trough, the circulation of air begins to set in. See, अब इसका एक यूनिक फीचर होता है. अ यूनिक फीचर ऑफ द हॉट वेदर सीजन इन इंडिया इज लू. एक यूनिक फीचर होता है गर्म मौसम में हमारे, उसको हम लोग लू कहते हैं. देखो लू होता क्या है? लू आर स्ट्रॉन्ग, हॉट एंड ड्राई विंड्स दैट ब्लो ड्यूरिंग द डे इन समर ओवर नॉर्दर्न एंड northwestern India. They may even continue till
midnight. अच्छा, इस मौसम में, इस समय many people suffer from heat strokes. You all would be knowing this word, heat strokes. Many people suffer from heat strokes or other fatal consequences when they are exposed to these hot winds. During May, अच्छा देखो, जो मई का महीना होता है, during May the areas experience dust storms. इन सब जगहों पे dust के storms चलते, जो आंधी चलती है, जो हवा चलती है, उसमें dust होता है. The dust storms bring some relief from the intense. These dust storms bring some relief from intense, oppressive heat for a brief time. They are accompanied by, इसके साथ क्या accompany करती है? They are accompanied by light drizzle, हल्की हल्की जो बारिश स्टार्ट होती है, बूंदाबांदी जिसे हम लोग कहते हैं, by light drizzle and cool breeze और ठंडी हवा. In some areas, locally formed thunderstorms along with violent winds. Torrential rainfall with hailstorms may also occur. See, when the summer season is about to reach an end, जब summer season खत्म होने पे आ रहा होता है, Kerala and Karnataka experience pre-monsoon showers. अच्छा, वहाँ पे तब pre-monsoon shower आते हैं. These showers are vital in aiding the ripening of the mango crops. अच्छा, ये जो बारिश होती है, इससे क्या होता है, जो मैंगो होते हैं, हम लोग के जो आम होते हैं, देखो कहते हैं ना कि जून जुलाई में बारिश आएगी, उससे ही आम पकेंगे. सो दीज शावर्स आर वेरी वाइटल इन एडिंग द राइपनिंग ऑफ द मैंगो क्रॉप. हैंस दे हैव अर्नड, इसीलिए इसको हम लोग, दे हैव अर्नड द नेम ऑफ मैंगो शावर्स. क्योंकि ये जो शावर होती है, जो ये बारिश होती है, इसके बाद इसमें जो मैंगोज वगैरह होते हैं वो पकने स्टार्ट हो जाते हैं. नाउ इट इज क्लियर चिल्ड्रन? Now, I am moving to the next point, cold weather season. Cold weather season, or we can know it by the name of, you can get this cold weather season in the season of winter. See, by mid-November, जो नवंबर का mid होता है, by the mid of November, the cold weather season sets in North India. ये North India में पहुंच जाता है. It prevails in the area till February. और कब तक रहता है? Prevail कब तक करता है? February तक. The coldest months of these seasons, जो सबसे ठंडे महीने होते हैं winter season के, हम लोग कौन से कहते हैं उसे? December and January. Remember that December and January are the most coolest months. The temperature at this time decreases from south to north. The mean temperature, जो mean temperature होता है, that is between 24 degrees Celsius and 25 degrees Celsius in Chennai. अच्छा, चेन्नई में जो टेम्परेचर होता है वो 24-25 होता है, और जो नॉर्दर्न प्लेन्स होते हैं यहाँ पे टेम्परेचर जो होता है that is between 10 to 15 degree, 10 degree Celsius and 15 degree Celsius. The days are mostly warm, but the nights are cold. Remember, the days are mostly warm, but the nights are cold. In the higher region, frost is common occurrence. अच्छा, जो ऊंचाई वाले क्षेत्र होते हैं, higher regions होते हैं, वहाँ पे frost is a common occurrence. In the winter season, the northeast trade winds, जो winter season होता है इसमें जो northeast trade winds होती हैं, prevail over the country. पूरे देश में northeast trade winds prevail करती हैं, blowing from land to sea. They cause most of India to experience a dry season. However, the coasts of Tamil Nadu receive most of its rains from these winds as they reach here from sea to land.
हम लोग अगर नॉर्थ इंडिया की बात करें तो इन नॉर्थ इंडिया अ वीक प्रेशर एरिया इज डेवलप्ड. इन नॉर्थ इंडिया अ वीक प्रेशर एरिया इज डेवलप्ड. लाइट विंड्स, जो लाइट विंड्स होती हैं, ब्लो आउटवर्ड्स फ्रॉम दिस रीजन. हल्की हवा जो होती है वो बाहर निकलती है. लाइट विंड्स ब्लो आउटवर्ड्स फ्रॉम दिस रीजन. दे आर अफेक्टेड बाय द रिलीफ. These winds blow through the Ganga Valley from west and northwest. The fine weather in this season is marked by clear sky, low temperature and low humidity. Remember points याद रखना. जो यहाँ का फाइन वेदर होता है, the fine weather in the season is marked by, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? The sky is clear, टेम्परेचर कम रहता है, लो टेम्परेचर एंड लो ह्यूमिडिटी. सो चिल्ड्रन, अगर हम लोग इनफ्लो ऑफ डिप्रेशन की बात करें, द इनफ्लो ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट इज द प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द कोल्ड वेदर सीजन. ओवर द नॉर्थ इंडियन plains known as the western disturbances. This low pressure system originate over the Mediterranean Sea and Western Asia. They are brought in by the westerly jet streams. कैसे आते हैं? By the westerly jet stream. The vital winter rain required by the land is caused. अब जो vital winter rain होती है, the vital winter rain required by the land is caused by this low pressure system. The winter rain falls. अच्छा, ठंडियों में जो जिन जगहों पे बारिश होती है, the winter rain falls over the plains and the Himalayas. प्लेन एरियाज में बारिश होती है ठंडियों में, और जो हिमालय होता है वहाँ पे बर्फबारी होती है. हिमालय एक्सपीरियंसेस स्नोफॉल. दिस मियाग्ड रेनफॉल इज इम्पॉर्टेंट. ये हल्की सी जो बारिश होती है, रेनफॉल होती है, और ये बहुत ज़रूरी होती है फॉर द राबी क्रॉप्स एंड इज नोन लोकली एज महावत. और इसको लोकल भाषा में वहां कहा जाता है महावत. So children, the peninsular region has no particular wind season. जो peninsular region होता है, ऐसा कोई particular winter season नहीं होता. There is not much seasonal change in the distribution pattern of temperature. टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं आते हैं, कोई ऐसा नहीं आता है कि अब टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा. ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द सी, क्योंकि यहाँ पे सी है, सी का इन्फ्लुएंस रहता है, इसलिए टेम्परेचर में कोई ज़्यादा अप डाउन नहीं आता. सो द सेम काइंड ऑफ टेम्परेचर प्रिवेल्स. नाउ लेट्स टॉक अबाउट एडवांसिंग मॉनसून. इसको हम लोग एडवांसिंग मॉनसून भी कह सकते हैं, और वी कैन कॉल इट एज रेनी सीजन. See, the intensity, जो intensity होती है of the low pressure conditions, the intensity of the low pressure conditions over the northwestern plains is increased by first week of June. They are strong enough to attract trade winds. ये काफ़ी स्ट्रांग होती है कि लोग अट्रैक्ट कर लेते हैं ट्रेड विंड्स को, जो सदर्न हेमिस्फीयर पे होते हैं. These ocean originating southeast trade, these ocean originating southeast trade winds move over the Indian Ocean and cross the equator to follow the southwesterly direction. As they pass over the equatorial, जब लोग इक्वेटर के ऊपर से निकलते हैं, as they pass over the equatorial warm currents,
दे कैरी अ लॉट ऑफ मॉइस्चर. जब ये लोग इक्वेटर को क्रॉस करते हैं, इक्वेटर के ऊपर से निकलते हैं, वार्म करंट्स होते हैं इस समय, दे कैरी है, तो इसमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा हो जाता है. सो ये जो पास होते हैं वहाँ से इक्वेटोरियल वार्म करंट्स, ये अपने साथ मॉइस्चर ले जाते हैं. द मॉनसून्स आर पल्सेटिंग विंड्स. ये जो मॉनसून्स होते हैं ये पल्सेटिंग विंड्स होते हैं. एज कंपेयर टू द स्टेडी ट्रेड विंड्स, these strong winds tend to blow at an average speed of 30 किलोमीटर पर आवर. जो इसकी एक एवरेज स्पीड होती है स्ट्रॉन्ग विंड्स की ब्लो करने की, वो रहती है 30 किलोमीटर पर आवर. दे ब्लो ऑल ओवर द कंट्री इन अ मंथ्स टाइम. एक ही महीने में लगभग पूरे देश में ये घूमती हैं. दे ब्लो ऑल ओवर द कंट्री इन अ मंथ्स टाइम, leaving only the extreme northwest, violent thunder and the lightning that mark the sudden approach of the moisture-rich winds bring on what is popularly known as the breaking of the monsoon. मतलब मॉनसून यहाँ से स्टार्ट हो जाता है. The southwest monsoon, जो साउथ वेस्ट मानसून होता है जो इंडिया में आता है, ये अपने साथ क्या लेके आता है? मेजर चेंजेस इन इट्स वेदर. कई तरह के ये चेंजेस लेके आता है. अगर हम लोग बात करें चेंजेस किस तरह की, द इंडियन पेनिनसुला, जो इंडियन पेनिनसुला है, इट डिवाइड्स द मॉनसून इनटू टू ब्रांचेस. मॉनसून को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है. पहला होता है द अरेबियन सी ब्रांच एंड द सेकंड वन इज द बे ऑफ बंगाल branch. अगर मैं if I talk about the characteristics of the Arabian Sea branch, चलो आज हम लोग पहले पढ़ लेते हैं characteristics of the Arabian Sea branch. से चलिए, the Arabian Sea branch, the Arabian Sea branch reaches Mumbai. ये मुंबई पहुंचता है 10 जून तक. The Western Ghats pose an obstruction to this branch of monsoon. Heavy rains occur on the windward side of the Sahyadris. This monsoon branch crosses the Ghats and reaches the Deccan Plateau and Madhya Pradesh, where it causes some rainfall. और इसके चक्कर में यहाँ पे, इसके कारण वहाँ पे बारिश होती है, और बारिश बहुत ज़्यादा नहीं, it creates only some rainfall. See, this branch then enters the Ganga plains. फिर ये जो ब्रांच होती है ये एंटर करती है गंगा प्लेन्स पे, to meet the Bay of Bengal branch. Another sub branch hits the सौराष्ट्र. दूसरी एक सब ब्रांच होती है, वो हिट करती है सौराष्ट्र को, सौराष्ट्र पेनिनसुला एंड द कच्छ बाय मिड जून. अच्छा, दिल्ली की अगर हम बात करें, दिल्ली रिसीव्स रेनफॉल बाय द 29th ऑफ जून. जून का जो एंडिंग डेज होता है तब रेनफॉल दिल्ली पहुंचती है. एज दिस ब्रांच पासिस, अभी जो ब्रांच होती है, इट पासिस ओवर वेस्टर्न राजस्थान, यही वेस्टर्न राजस्थान को क्रॉस करती है. इट कॉजेस स्कैंटी रेनफॉल. स्कैंटी मीन्स लेस रेनफॉल. सी, जो ये ब्रांच होती है, दिस ब्रांच मीट्स द बे ऑफ बंगाल. दिस ब्रांच मीट्स द बे ऑफ बंगाल branch in Punjab and Haryana to cause rains in the western Himalayas by the first week of July. समझो, दिल्ली में जून एंड में और जुलाई में, एंड जो फर्स्ट वीक होता है जुलाई का, ये पहुंच जाता है पंजाब और हरियाणा में. Now the next point is characteristics of the Bay of Bengal branch. If I talk about the characteristics of the Bay of Bengal branch, okay children, we'll be starting in the next class. Let's come to the question.
Children, I hope so that this much would be clear to you. Now, let's come to short answer. You all are ready for the short questions? Yes, all. Anushka and Archika, where you both are? Khushi, where are you? Okay, let's come to the first question. What is the name given to the climate? What is the name given to the climate of India? इसका इसी क्वेश्चन का पार्ट है. Mention any two factors responsible for such a type of climate. Anyone would give the answer? See, the question is, what is the name given to the climate of India? India has a tropical monsoon climate. India has a tropical monsoon climate. अच्छा, इसी के बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन है, mention any two factors responsible for such a type of climate. So children, as you know that India has a tropical monsoon climate, and the two factors which are responsible for such a climate are, first one, the Himalayas stretching from east to west. The Himalayas stretching from east to west in the north. And the second point is the presence of the monsoon winds. The presence of the monsoon winds which bring rain to the country. Is the answer clear, children? Would be visible on your screen also? The answer is visible on your screen. Okay. Now let's move to the other question. Second question. The second question is, name the factors that influence the climate of India. Name the factors that influence the climate of India. Kratika, send your answer. The question would be soon visible.
Okay, see, right? Okay, children. The answer is right. The factors that influence the climate of India are the first point, the great mountain walls of Himalayas. Second point, latitude or distance from the equator. Third point, altitude. Next point is distance from the sea. The last point is temperate cyclones or western disturbances. Now the third question for today, third and the last, explain two factors that affect the climate of India, giving a suitable example for each. The question is going to be on your screen. Yes, Kritika, send your answer. Okay, the answer is right. Now, I should tell you the answer. See, the two factors are, इसके दो factors होते हैं. The two factors are the Himalayan mountains and the distance from the sea. थोड़ा सा मैं इसको explain करता हूँ. See, the two factors that affect the climate of India are the Himalayan mountains. See, this Himalayan mountain acts like a barrier as it prevents the cold winds from the Central Asia. Remember, the Himalayas, the Himalayan mountain acts like a barrier as it prevents the cold winds from Central Asia from reaching India in winter, thus saving it from a severely cold climate. In the summer season, the Himalayas intercept the rain-bearing southwest monsoon, causing heavy rains in India. The other point is distance from the sea. See, places near the sea, जो भी जगह जो समुद्र के पास होती है, places near the sea have a maritime or moderate climate like Mumbai, whereas places far from the sea, और वो जगह जो काफ़ी दूर हैं, which are far from the sea, have a continental climate like Lucknow. लखनऊ को अगर हम लोग देख लें तो यहाँ पे कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट रहता है. So children, for today this much only. In the next class, I'll be starting from the point of where I have left today. My point was from characteristics of the Bay of Bengal branch. Till then, just go through the chapter